वर्ल्ड कप शुरू होने में बस आधा घंटा बचा है एंड वी आर हियर विद द फर्स्ट वॉच अलोंग स्ट्रीम। मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका कमाल का ओपनर होने वाला है। 2010 को रिक्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग एंड वी आर अप फॉर एन अमेजिंग गेम। और बाकी सब तो एक तरफ, वी हैव बर्नार्डो सिल्वा जॉइनिंग रियल मैड्रिड। हियर वी गो सून आ चुका है फ्रॉम फब्रिजियो। So we are gonna see him we are gonna see him in the Real Madrid jersey next season, which is heartbreaking for me क्योंकि बार्सिलोना के साथ भी लिंक्स बने थे बर्नार्डो सिल्वा के, and unfortunate that he is not coming to Barcelona, but we have good enough midfielders in our club, so fair for them as well. मैड्रिड के लिए आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा जैसा एक प्रोफाइल उनको जरूरत था। they were lacking in a midfield, of course, with Jude Bellingham, with Toni Kroos going, उनके पास कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं था जो मेंटेन कर पाए मिडफील्ड को। आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा कुड सेव देम ऑन दैट प्लेस। लेट अस सी, will he be the next Galactico or not? हाँ, so hi Darpan, how are you? And we have our first viewer in our watch along. So lovely to see you. So we are just about to begin the match in 15 minutes. So let's go, let's go. मैच लगा लूं। लेट्स गो मेक्सिको फिडोस भाई।
मोबाइल में बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे रूम में टीवी नहीं है एंड आफ्टर लैपटॉप में ऑलरेडी स्क्रीन चल रहा है सो इतना रैम भी नहीं है कि उसमें चले सो दैट्स वाई मोबाइल में we have the flags out on the pitch so amazing scenes from the Estadio Azteca. We have the flags waving on the pitch. सारी टीम्स के फ्लैग्स सारी टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में we have the flags of all the teams England, Uzbekistan, Portugal, Austria, Canada, Mexico, USA being the hosts, Croatia, Colombia, Democratic Republic of Congo, Spain, Saudi Arabia, France, Iraq, Argentina, Canada, Panama, Uruguay, New Zealand, Egypt, South Africa, South Korea, Switzerland, Morocco, Brazil, all the nations out there representing themselves on the greatest stage. So before the match begins, एक बार हम लोग लाइनअप देख रहे हैं ऑफ कोर्स मेक्सिको जो कि 4-1 स्टार्ट करने वाली हैं विद कोच जेवियर एक्वेरो बैक फोर में वी हैव गलार्डो वास्केस मुंतेस एंड रेयस मिड वन में अगर हम देखें तो लीरा क्विनोस
Fidalgo, Guterres, Alvarado as the midfield four. I think दो wingers हमारे पास हैं, good wingers. If I say and Jimenez up top and Rangel at the goal. Of course हम लोग ओचुआ को नहीं देख रहे गोल में, which might be odd because Mexico or Ochoa has been a long journey, but uh, with his age, I think this is the correct call by the coach. अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो विलियम्स विल बी on the goal post. Ronwen Williams, 34 aged goalkeeper. I think he's the captain of the South African team, and we can see the World Cup with Gianni Infantino. This is a trophy for which 48 teams will contest across three nations once in 4 years. This is the Estadio Azteca where the first match will be played. Mexico versus South Africa. The world awaits. Yes, he might. Ronwen Williams, captain of South Africa. Let's go, let's go. The first walk-off of the 2026 FIFA World Cup. Historic moment है for every football fan around the world. एक डिफरेंट अप्रोच हम लोग को देखने को मिलेगा इस साल वर्ल्ड कप में. Players will stand in a round, in a circle, in the middle circle, facing each other. A different approach, but the same game. I don't know, मुझे इस पे कोई टिप्पणी तो नहीं करनी अभी, but with the huge flags, it is looking. Or the whole squad is there. The whole squad is out for the first game. Ochoa is there. The number one keeper is there. It's the world's game, the FIFA World Cup, to begin in few minutes. National anthem of South Africa being played. कितना important है इन players के लिए to represent their country. Keep an eye on Lyle Foster, player from Burnley, 25-year-old striker, starting today as the number 9 of South Africa. Keep an eye on him.
We have two choppers moving. Uh, Predictions for the World Cup's first match. Can we get some predictions on the chat? I think मेरे लिए इस मैच में Mexico is killing South Africa, isn't it? Do we have some predictions on the chat? Mexico, but the score line. मुझे लग रहा है मेक्सिको 3-0. Yeah, sure to be Mexico, but language पर भाई language. मुझे फैमिली फ्रेंडली चैनल बनाना है, तो प्लीज. नो वरीज मेट, नो वरीज. 3-1 और 3-2. या आई डोंट नो, यहाँ पर नहीं आ रहा है. हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, पता नहीं. यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है कि चैट पे नहीं आ रहा है, बट आई कैन सी ऑन द ओबीएस. So we have the lineups on the screen as well. 3-1, 3-1 it is. ठीक है, let's see. For me it is 3-0 to Mexico. देखते हैं. Can South Africa score? um, Lyle Foster, top striker, playing in the Premier League, might score a goal. Let's see, let's see. South African lineup being shown on the screen. Match about to begin. दोनों ही टीम अपने सर्कल्स में डिस्कस करते हुए अपना फर्स्ट मैच ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026. फर्स्ट मैच, nerves, high on nerves. The time has come, the time has come. Yes, दोनों ही देशों के लिए carrying a billion dreams on their shoulders. This is Mexico versus South Africa as the FIFA World Cup 2026 opener.
and we have Mexico on the left of our screen and South Africa on the right of our screen. That means Mexico will be attacking left to right and South Africa attacking right to left on the first half of FIFA World Cup 2026. And that's the first kick-off of 2026 World Cup. We have begun officially. Passing on the back line of Mexico. Johan Vasquez. Johan Vasquez again, the left back of Mexico. Ball back to Vasquez. Sorry, अब थोड़ा मिस हो गया था मुझसे. Let me take it in. Yeah. South Africa has the ball now. अपने मिडफील्ड पे बॉल को पास करते हुए बैक टू विलियम्स. रॉनवेन विलियम्स के पास बॉल एंड हार्ड टच. जेवियर अग्वेरो, मेक्सिको के हेड कोच. From July of 2024, he has managed Mexico. We have Roberto Alvarez down. So we have the first set piece of the World Cup as well, with Mexico getting a free kick. Will Gutierrez take it? Nahi. Directly on the wall, and that would be a throw in. The stadium is jam packed with people supporting Mexico. Reis, cross, and that's a good save by Williams. Amazing save by Williams. जिमिनेज का कमाल का शॉट था. Good placement, but top save by Rowan Williams. So that was the first attempt on target of 2026 World Cup, guys. Cross.
Good defending by the African defenders. Mexico have the ball back. South Africa has a chance of counter attack. Oh, that was a very bad pass throw by Lyle Foster, player for Burnley, 25 years old striker. सिर्फ 5 मिनट हुए दोस्तों पर nice save, amazing save from the South African goalkeeper. Crazy, yes, crazy it is. अबे यहाँ क्यों नहीं आ रहा है चैट? I need to fix this somehow. Shit. Yep. Vasquez has the ball. Vasquez carrying the ball. We have Jesus Gallardo with the ball जिन्होंने I think it is a corner. It isn't a corner. It is a corner. Wait, it should have been a corner पर पता नहीं. Oh, that was a foul. Oh no, that is a goal kick. Throw in for South Africa. Should have been a corner. मुझे तो देख के ऐसे ही लगा because he was going for the ball और पता नहीं. Game goes on. और मेरा गेम अटक गया. Is the stream all right? Shit. टीवी पे सब्सक्राइब किया है. Yes. मजा आ गया. अरे भाई स्पॉइलर. अरे ओ शिट. We have a goal from Julian Quinones. पता नहीं मुझे नाम में थोड़ा. Amazing goal. First goal by the hosts themselves. I think हमने ये स्क्रिप्ट पहले भी पढ़ा है ना? शाला बालाला. Julian Quinones becomes the first scorer of 2026 FIFA World Cup. Amazing goal. थोड़ा सा टाइमिंग में गड़बड़ from Rowan Williams. Of course, he's a top goalkeeper, but इस बार पैरों के बीच से निकल गई बॉल. पकड़ ना पाया कोई. मजा आ गया.
first goal of FIFA World Cup. Let's go. 10 मिनट्स इनटू द वर्ल्ड कप और हमारे पास पहला गोल आ चुका है। इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि इस साल इस सीजन ऑफ द वर्ल्ड कप वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ गोल्स, सीजन ऑफ अटैकर्स। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स प्रेस करते हुए। Oh, that was rough. That was rough. ह्यूगो ब्रूस साउथ अफ्रीका के कोच, बहुत टाइम से साउथ अफ्रीका के साथ है। ही इज विद साउथ अफ्रीका फ्रॉम 2021। with South Africa he has a 46% of win rate। थोड़ा कम है बट स्टिल एक लंबा प्रोजेक्ट बिल्ड करते हुए विद साउथ अफ्रीका। मैक्सिकन मैक्सिकन गोल की राउल रेंजल, नॉट ओचवा फ्रॉम आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, बट हमें इसे के साथ यूज टू होना पड़ेगा। बॉल टू वास्केस फ्रॉम मोंटेस, गुड बॉल इन। देखना पड़ेगा कि कहीं वो ऑफ साइड नहीं है। जिमिनेज, योहान वास्केस इज हैविंग अ टॉप गेम टू बी ऑनेस्ट। अभी तक मतलब 10 मिनट ही हुआ है, फिर भी द टचेस ही हैड, द passes he has made, top number 5 of Mexico। और कॉर्नर लेते हुए एंड into the hands of Ronian Williams, goalkeeper of South Africa। इन्फेंटिनो मैच देखते हुए मेक्सिको आई थिंक मिडफील्ड में बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ रही है। आई थिंक साउथ अफ्रीका को वो स्पेस कैपिटलाइज करना चाहिए between their defense and their midfield। there are being voids, बीच बीच में बन रहे हैं। I think South Africa should capitalize on those spaces being made। Gallardo, Mexican players demanding for a foul, but ref says no। या अभी देखो आप, साउथ अफ्रीका भी स्पेसेस छोड़ रही है बीच में। आई थिंक बोथ द टीम्स आर ऑन द सेम फेज। अगर उस स्पेस को कैपिटलाइज करो तो आई थिंक दे कैन स्कोर अ गोल। Ankit joined the chat as well. Thank you for joining the stream. Enjoy the game. Enjoy the game. We have another foul. I think booking. Nah, that's not a booking, but ठीक है, चलो।
चलो चलो चलो, यस। ग्रिटी टैकल, बट अफ्रीकन टीम्स ये करती है विथ यू। जिमिनेज, टॉप प्लेयर। विच चैनल आई एम वाचिंग, मैं ओपनली बता नहीं सकता क्योंकि फॉर सर्टेन रीजंस यूट्यूब में बताओ तो कॉपीराइट आ जाता है, तो चैट में इफ देर इज दर्पण स्टिल ऑन द चैट तो उसको बता दो भाई कैसे देखना है। आई नो इट्स फाइन इन असमीज, बट मुझे हिंदी चैनल बनाना है, सो वी हैव अ फ्री किक which will be taken by Mondria, and that's a good interception by the Mexican player. Darpan, you know the name of the site, just tell him. Mexico triangles banate hue, and that's a foul on, and that will be a yellow card to number to dikha do, to Mukena player from South Africa, 29-year-old, number 4 of South Africa. He's being booked, और पहला येलो कार्ड फीफा 2026 वर्ल्ड कप का टू मुकेना, साउथ अफ्रीका, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। good good ball win in the midfield. अटैकिंग मिडफील्डर्स हाँ थोड़ा बहुत है, बट उनके फुल बैक्स भी अच्छे से क्या बोलते हैं मिडफील्ड के साथ कंबाइन कर रही है, सो इवन दैट माइट हार्म। दे आर प्लेइंग 4-1-4-1, 3-1-3-1 से 8 ही प्लेयर्स होते हैं, तो 10 प्लेयर भी बनाने हैं ना। पास टू रेंजल, या दे आर क्वाइट बेनिफिशियल ऑन द काउंटर अटैक, स्पेशली लुकस वास्केस बोल रहा हूँ, वास्केस का गेम अच्छा जा रहा है, राहुल वास्केस आई थिंक, या योहान वास्केस, उनका गेम अच्छा जा रहा है। गुड बॉल फॉर मेक्सिको। यप, गुड शॉट नहीं, वेरी वाइड, यस बैंक मैक्सिमम। शॉट फ्रॉम यूलियन क्वियोनास, पहला गोल इन्हीं ने मारा है, एंड टू लेट यू नो ही इज द सऊदी प्रो लीग top scorer last season, so in a league where Cristiano Ronaldo is playing and um, scoring goals week in and week out,
He is the top goal scorer in that league as well. So keep an eye on him as well. Quionas. And thank you for subscribing, uh, Ankit Bhai. आई थिंक मेक्सिको भी एक बैक टू सिस्टम पे लाइनअप हो चुकी है विथ नंबर्स पुटिंग इन फ्रंट. तीन अटैकर्स दिख रहे हैं हम लोगों को एंड दैट वाज अ गुड पास बट गुड इंटरसेप्शन बाय Montes as well. Montes पे ये टैकल. I think this will be a foul. Thank you, thank you. Foul by Mudea. Khuliso Mudea, 31-year-old defender from South Africa. Oh, good cross in, but well defended by South Africa. Uh, oh, that was बचा लिया. बच गए क्योंकि फंबल किया था वहां पर रेंजल ने बट टैकल यहाँ पर ऑन मुकेना और येलो कार्ड मिलते हुए गुतियरेज को. ब्रायन गुतियरेज, 22-year-old. विल यू बी लाइव एवरीडे? कोशिश तो है पर देखते हैं. आई डोंट थिंक कि मैं सुबह वाले मैचेस को ज्यादा कर पाऊंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट करने के लिए लाइव. इस प्लेयर का नाम शिट होल है. एक प्लेयर है, हिज नेम इज शिट होल फ्रॉम साउथ अफ्रीका. आई थिंक नंबर, मैं भूल गया नंबर. नंबर 13, जर्सी नंबर 13. इट वाज नॉट इवन अ प्रॉपर टैकल है. मतलब हो सकता है, मैंने उतना नोटिस नहीं किया बट ओके. रेफरिंग हमेशा से ही गड़बड़ रहता है, ये कुछ ना कुछ तो पता नहीं. क्रॉस defended well. We have Mabaki with another cross but defended well by Mexico. Why is everyone saying Jordan can get into the finals? मुझे नहीं पता, मैं घाना का सुन रहा हूँ. I am getting a lot of reels about Ghana winning the World Cup. He reacted after 10-15 seconds. हो सकता है मतलब. And we have the drinks break जो कि another addition है to the 2026 FIFA World Cup
because of the extensive heat we are having in America. uh, I don't think मतलब फुटबॉल में ये चीज एड अप होना, ड्रिंक्स ब्रेक is a whole new is a whole new dynamics, adds a whole new dynamics to the game. Situation of Morocco, अब मोरक्को के दो important players are injured. मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ अभी, बट मोरक्को कैन गो, डिपेंड करता है बिकॉज दे आर ऑन अ ग्रुप जिसमें आपके पास ब्राजील है, दे हैव हेटी एंड स्कॉटलैंड. अब हेटी में मैं नहीं बोलूंगा हेटी, दे आर अ फार अबव गुड टीम वेन्यू इन द सेंस. उनका मैचेस कहाँ होने वाला है? आई थिंक देयर मैचेस आर ऑन अमेरिकन सॉइल. जयाश क्या है, मे बी द नेम ऑफ द प्लेयर मैं थोड़ा भूल रहा हूँ उसमें, बट they have a good team. Of course, they have a good team. And they have a good team. I think good enough कि वो लोग क्वार्टर फाइनल्स तक तो निकाल ले. मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका इज हैपनिंग एट मेक्सिको सिटी स्टेडियम, जिसे हम लोग फुटबॉल फैंस एस्टाडियो एस्टेका भी बोलते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रिलेटेड स्टेडियम है. वी हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्री इन देयर. अगर आप मैराडोना के हैंड ऑफ गॉड की बात करो तो इसी स्टेडियम में हुआ था. एंड 86 में जब मैराडोना लिफ्टेड द वर्ल्ड कप, दैट आल्सो हैपेंड इन दिस स्टेडियम इटसेल्फ. तो वन ऑफ द मक्का ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता है इस स्टेडियम को. अमेजिंग स्टेडियम with all the history it has. So amazing venue, top venue. About Hakimi and Ziyech, अब Hakimi ने last season he was injured for a lot of time. So मतलब देखना पड़ेगा. He played in the final of the Champions League with Paris Saint-Germain. देखना पड़ेगा. इट्स अ वर्ल्ड कप, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है कि फुल सीजन एक प्लेयर अगर अच्छे फॉर्म से आ रहा है तो उसका वर्ल्ड कप अच्छा जाएगा कि नहीं. इट डजंट डिपेंड ऑन दैट. हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं जस्ट ऑन द सोल ऑफ प्लेइंग फॉर देयर ओन कंट्री. उस जर्सी को पहन के दे प्ले डिफरेंट. तो फॉर हकीमी ऑल्सो ही इज अ टॉप प्लेयर. उसे पता है कि what it means to play in this level. So अच्छा ही होना चाहिए. We have the possession with South Africa. Mexico attacking in numbers. Ball to Jimenez. Johan Vasquez. Gallardo. To Queenes again. Good ball. Good, good block by the South African defender. आई थिंक साउथ अफ्रीका ट्राई कर रही है कि लॉन्ग बॉल्स में कैसे वो लोग मतलब काउंटर अटैक करे, बट आई थिंक उनके स्ट्राइकर्स अगर आप कंपेयर करो विथ मैक्सिकन डिफेंडर्स तो दे आर नॉट टॉल इनफ.
तो मुझे नहीं लगता कि दिस इज गुड अप्रोच कि आप लॉन्ग बॉल्स पे ट्राई करो ज्यादा। गुड शॉट, क्रॉस की ट्राई थी बट इनटू द हैंड्स ऑफ विलियम्स। Good press by the Mexican attacker. Czech Republic. Czech Republic, people are thinking that they are going good into the competition. They are also in the Group A. मेरी prediction में they are on the fourth, क्योंकि अगर आप अमेरिकन कंडीशंस में देखो तो चेक रिपब्लिक इज अ वेरी कोल्ड कंट्री, और हमें इसको भी अंडर कंसिडरेशन तो रखना ही है कि टीम्स लाइक नॉर्वे, स्कॉटलैंड, देन वी हैव स्वीडन, चेक रिपब्लिक, ये सब कंट्रीज में दे आर नॉट accommodate to playing in this kind of conditions जो हमारे पास अमेरिका में होने वाले हैं। यू सी 25 मिनट्स में हमारे पास ड्रिंक्स ब्रेक हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चेक रिपब्लिक वुड गो मच। सॉरी, मैं लेवरकुसन के मैचेस फॉलो नहीं करता था, सो पैट्रिक शाइक इज मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, बट I would surely do some research before the Czech game about Patrick Schick. हाँ, that is what I am talking about. South African defenders coming in front. एक और लॉन्ग बॉल आई थिंक ऑफसाइड होने वाली है। हाँ, ऑफसाइड है। मुदीबा was offside indeed. टफ कंडीशंस, एंड क्योंकि यूरोपियन प्लेयर्स, उनको क्या दे आर, उनके लिए 25 डिग्री 28 डिग्री इज हॉट, सो फॉर देम playing at 30 डिग्री 35 डिग्री इज टफ। जो भी हो कि एक महीने पहले वो लोग खेल रहे हैं, बट प्लेइंग 90 मिनट्स, प्लेइंग 120 मिनट्स, इट्स टफ। जिमेनेज वांट्स द बॉल, थ्रो इन मिली है साउथ अफ्रीका को। गुड बॉल, गुड बॉल। Lyle Foster should have taken a shot there. South America, Africa, Asia has an advantage, especially Middle East. Carlos Puyol on the stands. मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हमारे पास कतर है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन, जॉर्डन है, जॉर्डन नहीं, सॉरी, जॉर्डन तो वी हैव, अफ्रीका में वी हैव इजिप्ट। गुड अटैक बन रहा था, बट साउथ अफ्रीका आर बैक ऑन नंबर्स। Nice tackle by number 14. That is Algeria. Algeria is the top team. मोरक्को, इजिप्ट, ऑफ कोर्स मैंने बात की है उन पे।
Egypt में of course we have Salah who is playing his last World Cup. Omar Marmoush है, and Algeria में भी हमारे पास top players हैं. Good attack by Mexico, cross and into the hands of Rowan Williams. Algeria में they are on the group of Argentina, Algeria, Jordan and who you have with them, Austria. तो एक्चुअली अगर मैं टीम कंपैरिजन करूँ तो ऑस्ट्रिया कम्स अबव अल्जीरिया, बट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस मेरी प्रिडिक्शंस में दे फिनिश सेकंड ऑन द ग्रुप, देन ऑस्ट्रिया एंड देन जॉर्डन. तो लेट्स सी क्या होता है. एंड इवन विथ मोरक्को दे आर इन द ग्रुप ऑफ ब्राजील, राइट? सो मेरी प्रिडिक्शन वीडियो लास्ट स्ट्रीम जाके अगर टाइम है तो देखना. तो वहां पर मैंने मोरक्को को प्रेडिक्ट किया टू टॉप द ग्रुप, एंड आई थिंक बहुत एक टफ फिक्सचर में उनको मैंने बाहर किया था, बट आई थिंक मोरक्को का वर्ल्ड कप लंबा जा सकता है. अभी तक इस गेम में मेक्सिको ने प्रॉपर अटैक्स अगर बात करूं तो 4-5 बनाए हैं एंड गुड चांसेस. डिफेंडिंग बाय साउथ अफ्रीका हैज नॉट बीन दैट वेल, which was quite expected, but even in the attack South Africa, I think they need to do more to break this Mexican defense. मिडफील्ड में बहुत जगह छोड़ रही है मेक्सिको. इन समटाइम्स कैपिटलाइज करना चाहिए साउथ अफ्रीका को, बट अभी तक तो नहीं कर पा रहे हैं. 10 मिनट बच रहे हैं इन द फर्स्ट हाफ एंड स्लॉपी गेम्स थोड़े देखने को मिल रहे हैं यहाँ वहाँ. बॉल won in the midfield by South Africa. Good pass. Mudue to Mbaki. Good cross. Good header, but stays wide by Lyle Foster, player from Burnley. आई थिंक ये पहला शॉट है साउथ अफ्रीका का. आई थिंक विलियम्स ने अच्छा गोल कीपिंग किया है अभी तक. कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स. लॉन्ग बॉल्स में बहुत प्रेशराइज कर रही है साउथ अफ्रीका, बट आई डोंट थिंक दैट इज द करेक्ट वे टू बीट मैक्सिकन डिफेंस. लंबे चौड़े लड़के हैं भाई मेक्सिको के. Johan Vasquez to Eric Lira. Again Johan Vasquez. Lira pe, yeah, that was a rough tackle on Eric Lira, 26-year-old Mexican midfielder. So
Montes. अच्छा विन किया था साउथ अफ्रीका ने, बट थ्रो इन टू साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर थोड़ा ग्रिटी मैच चलते हुए। मेक्सिको 1-0 चलते हुए। डोंट वी हैव दिस? सॉरी, मुझे पता ही नहीं था वहां पर वो चल ही नहीं रहा था। मेक्सिको इन नंबर्स इनटू द बॉक्स। And that's an amazing save by Williams. That was a top save by Williams. ऑफसाइड नहीं था यहाँ पर। जिमेनेज का जिमेनेज का वॉली, ऑलमोस्ट वॉली, हाफ वॉली। टॉप सेव बाय विलियम्स। आई थिंक अभी तक 2 गोल्स तो रोके ही है विलियम्स ने। स्विट्जरलैंड 5 मिनट रुक जाओ। Let us go to the and good block by the defender and post. साउथ अफ्रीका ने कुछ तो भाई वुडू वुडू कराया है, ठीक है। अभी तक साउथ अफ्रीका 3-0 डाउन तो मतलब मिनिमम होना चाहिए था। भाई कैसे? 2 क्लोज कॉल्स, एक्सट्रीमली क्लोज कॉल्स। आई थिंक पहला वाला तो अच्छा था कि डिफेंडर ने ब्लॉक किया। वन आफ्टर अनदर एपिक मिसेस ऑन द फर्स्ट डे। व्हाट अ मैच, what a match it has been, what a first half it has been. Mexico again has the ball. South Africa trying to press hard, but Mexico has the ball. South Africa regaining the numbers back, but good defending again. साउथ अफ्रीका अपना ओचुआ लेके आई है। यस, ओचुआ नहीं, आज याशीन आया है, सीधा याशीन। याशीन का आत्मा आज विलियम्स के अंदर आ चुका है। वी शुड बिलीव इन दैट। What an amazing first half to have. What an amazing first half to have. Corner for South Africa, I think first नहीं, second corner है। 2 मिनट बचे हैं बिफोर द हाफ टाइम। कैन साउथ अफ्रीका इक्वलाइज? शॉर्ट पेनल्टी ली है, क्रॉस डिफेंडेड वेल बाय मेक्सिको, एंड दैट्स अ लॉन्ग शॉट इनटू द हैंड्स ऑफ रेंजल, रॉल रेंजल, the 26-year-old Mexican goalkeeper. Any updates on South of Korea? Yes, we will be talking about that. Just 1 minute.
मतलब 45 after the in the halftime break. Williams on correct time clearing the ball, वरना अच्छा चांस बन रहा था मेक्सिको के लिए वहां पर भी. मेक्सिको के डिफेंस के पास बॉल है. एडिशनल टाइम नहीं है. I think there will be no stoppage time. Oh, no, +4. We have got +4 minutes of first half. Um, can South Africa equalize in this 4 minutes? I doubt. Rangel has ball. Eric Lira अपने प्लेयर्स को आगे आते हुए बोलते हुए DD Sports is telecasting club tennis instead of FIFA World Cup. Total shit. हैं हैं DD Sport ने ऐसा चीट किया है क्या? कल एक पोस्ट में डीडी स्पोर्ट का ही पोस्ट था. इन दैट दे वर शोइंग दैट दे विल बी showing the first match and also the four semifinals. Sorry, not the four semifinals, the two semifinals and the final as well. But अभी अगर टेनिस दिखा रहे तो साउथ अफ्रीका मेकिंग एन अटैक और अच्छा स्टॉप by the Mexican defender. Asking for a corner. And it was a corner. It was a corner. But रेफरी को कहा ही दिख रहा है वहां से तो हाँ. But this year there was a new rule कि VAR would intercept in this kind of things जहाँ पर corner last मतलब किसके पैर में लग के निकल रहा है ये सब करेगी बोल के सुना तो था बट अभी तक इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ है. आई थिंक दे शोड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट मैच. नहीं ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं दिखा है बिकॉज आई वाज सिटिंग देयर. मैं टीवी में बैठा था फ्रॉम 11 बजे ओपनिंग सेरेमनी था. शकीरा एंड ब्रूनो बॉय का परफॉर्मेंस था. डीडी स्पोर्ट्स में नहीं था वो. सो आई डोंट नो. एंड बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए. साउथ अफ्रीका अभी तक तो बच रही है बस. दे वर शोइंग खेलो इंडिया. हम्म ये तो देखा था मैंने कि नेक्स्ट में खेलो इंडिया का कुछ था. जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट. 1 मिनट आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक. व्हाट्सएप में चेक कर लेना. couldn't keep the ball inside the field. Reynolds. And that's where we have the half time. Mexican fans absolutely celebrating क्योंकि they are 1-0 up against South Africa.
So what an amazing first half हमें देखने को मिला in the first match of FIFA World Cup 2026. So so yeah, so he Ankit wanted me to talk about किसके बारे में? स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड मेरी predictions एक सेकंड रुको. 5th मिनट का चांस कौन सा था? हम्म, अच्छा जो स्टॉप जो गोल सेव जो बढ़िया सेव था फ्रॉम विलियम्स. या दैट वाज एन अमेजिंग चांस दे मेड. मेरे पास चैट क्यों नहीं आ रहा है? कैन एनीबडी चैट प्लीज? कोई चैट में कुछ लिखो तो यहाँ पर समझ आए कि आएगा कि नहीं. स्विट्जरलैंड के बारे में मुझे डिस्कस करना था. गो गो नहीं. हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. थैंक यू, थैंक यू. इट इज अयान आई गेस. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज वेल. सो स्विट्जरलैंड यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है शायद से, पता नहीं मुझे. हाँ, स्विट्जरलैंड आई हैव केप्ट देम टॉप ऑफ द ग्रुप बिकॉज मुझे लगता है कि कनाडा एज ए होस्ट विल नॉट बी डूइंग. अब इसको क्या हो गया? ठीक हो जा भाई, ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा, है ना? हाँ हो गया. So I think Canada as a host would fumble because last season Alfonso Davis जो उन लोगों का टॉप प्लेयर है, Jonathan David as well, वो लोग were out for almost full season, injured रहे थे. तो मुझे नहीं लगता कि Canada would be doing well. I am even keeping Qatar over them क्योंकि मुझे लगता इंस्टिंक्ट है एक तो प्रेडिक्शन का, बट मुझे लगता है कि कतर विल बी डूइंग गुड दिस वर्ल्ड कप. मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डार्क हॉर्स बन रहे हैं, बट दे कैन गो टिल द राउंड ऑफ 32 एटलीस्ट. एटलीस्ट मुझे ये लग रहा है. तो स्विट्जरलैंड को मैं टॉप पे रख रहा हूँ. नींद आ रही है भाई. भाई कल सुबह 7 बजे भी तो उठना है. कल 7 बजे नहीं उठने हैं क्या? साउथ साउथ कोरिया वर्सेस चेक रिपब्लिक देखने का के लिए. हाँ, साउथ कोरिया वर्सेस चेक रिपब्लिक विल बी ऑन टुमारो 7:30. कॉफी खाओ कॉफी. आई एम गुड. मुझे नहीं चाहिए कॉफी बट आई थिंक आई नीड सम कॉफी.
Talking about this game, I think the amount of chances um, Mexico made over South Africa बच रही है बस अभी तक, है ना? डिफेंस उन लोगों का अगर अगर आप मिडफील्ड को क्रॉस करो साउथ अफ्रीका को, देन यू सी द गोलकीपर नेक्स्ट, क्योंकि डिफेंस में कुछ है नहीं इन लोगों के। टू डिफेंडर्स के साथ मोस्ट ऑफ द गेम ये लोग टू डिफेंडर्स के साथ खेल रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्यों, बिकॉज सेंटर बैक्स आर स्टेइंग ऑन द बैक, फुल बैक्स आगे जा रहे हैं, बट काउंटर अटैक का इंटेंट नहीं दिख रहा है। लॉन्ग बॉल्स पे खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स मेक्सिको हैज अ गुड डिफेंस देयर। योहान वास्केस, आई थिंक योहान वास्केस यहाँ पर रेटिंग्स उतनी अच्छी नहीं है, बट ही इज हैविंग अ टॉप गेम। योहान वास्केस गुड ऑन द बॉल। सब टाइम ऐसा नहीं, हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि जो प्लेयर सबसे ज्यादा बॉल के साथ है या फिर गोल्स मार रहा है, असिस्ट कर रहा है, सम हर टाइम वो प्लेयर अच्छा नहीं होता है। समटाइम्स दिस प्लेयर्स आर आल्सो गुड इन देयर पोजीशन एज वेल। तो अच्छा होल्ड अप था at many occasions, and we see him here. Next match direct Brazil Morocco. Yeah, we will be streaming that as well. So I think 3:30 को है मैच। I think 3:30 को है। कोई कंफर्म कर दो। I have my phone here, so 3:30 को मैच है। तो मतलब 3:30 को हमें उठना है या फिर ब्राजील वर्सेस मोरक्को से पहले हमारे पास कतर एंड स्विट्जरलैंड का मैच है। तो आई थिंक I will be streaming from 12:30 to 1:30 2:30। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, and then we will have 3:30 to 4:30 and 5:30। Amazing nights up ahead। थ्री थर्टी को उठी शाम तारागत हुई लॉन्ग। ओके। नेक्स्ट हम केटा थो 15 मिनट्स to 20 मिनट्स का ब्रेक होता है। सो स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अकेले अकेले आइसक्रीम, पर आइसक्रीम से आ, मतलब हाउ वुड यू स्टे अवेक विद आइसक्रीम? आइसक्रीम खाने के बाद मुझे तो नींद आती है पर्सनली, बट ठीक है। बट क्या लग रहा है ये मैच? आई थिंक जिस हिसाब से चल रही है, मेक्सिको शुड हैव स्कोर्ड फ्यू मोर गोल्स, बट क्योंकि नहीं मार पाई है फ्यू मोर गोल्स, तो अगले हाफ में आई थिंक मारना तो चाहिए, बट साउथ अफ्रीका हैव अ टॉप गोलकीपर, दे हैव अ टॉप गोलकीपर। हाउ ओल्ड इज ही? 34 years old. गोलकीपर्स का प्राइम जनरली 35 के बाद हिट करता है। ही इज ऑलमोस्ट ऑन हिज प्राइम एज। या मेक्सिको तो लग ही रहा है, बट कितने स्कोर से? क्योंकि इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द जीडी, क्योंकि हमारे पास ये भी एज वी हैव 48 टीम्स नाउ, तो राउंड ऑफ 32 नॉकआउट्स में एक राउंड बढ़ चुका है। 48 से 24 टीम्स विल गो डायरेक्टली टॉप टू ग्रुप के, एंड द थर्ड टीम विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स इक्वल रहे तो जीडी, अगर जीडी इक्वल रहे तो किसने ज्यादा गोल मारे, अगर वो भी इक्वल है तो किसने ज्यादा येलो कार्ड्स उठाए। सो एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, तो यू नीड टू मेंटेन एवरीथिंग। आइसक्रीम इज द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। बस कल सुबह पेट खराब ना हो जाए आपका। द गेम विल श्योरली एंड विथ 1-0। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि वुडू तो खड़ा है। यहाँ पर मुझे 1 व्यूअर दिखा रहा है, बट तुम लोग तो 2 देख रहे हो ना। यूट्यूब में 2 दिखा, 3 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। व्यूअर दिखा रहा है, बट तुम लोग तो 2 देख रहे हो। सेकेंड हाफ ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। प्लेयर्स आर वार्मिंग अप। Mexican players coming out of the tunnel. मैच प्रीव्यूज रिव्यूज भी तो बनाने हैं। आइस पैक लगाते हुए प्लेयर्स, जिससे आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना गर्मी है। इवन दो दे आर द मैक्सिकन प्लेयर्स जो अपने होम पे खेल रहे हैं, उसके बाद भी दे आर फीलिंग द हीट। यस यस यस, बाय 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 आयन, बाय। वॉच द गेम, एंजॉय द गेम। And the second half is about to begin in few
seconds, South Africa has kicked off the second half and they are attacking from left to right on your screen, and Mexico are attacking right to left on your screen. Williams के पास ball, goalkeeper of South Africa has had an amazing game till now, and that is a great fumble. That is a big fumble, and that is a big fumble from the Mexican player as well. क्या क्या he shot भाई. Okay अंकित, all good. भाई जैसे ही जिंक्स हो गया क्या भाई, जैसे ही तारीफ किया he misplaced a pass. डायरेक्ट जिंक्स हो गया भाई. Watching in Arabic hits something different. साइड में मेरी कमेंट्री लगा लो, आई एम कमेंटेटिंग इट इन हिंदी, सो यू हैव इट देयर. Good volley shot is from first half. Yes, half volley wala, and into the hands of Rowan Williams. एक लॉन्ग शॉट लिया था क्विनोस ने, but it was going into the nets, but there was Williams there. Volley shot, हाँ वो half volley जो था, that was from the first half and my match was no. And that was a good volley from Jimenez, but unfortunately they had South Africa had Williams on uh, as their goalkeeper. So Mexico has won the ball back. South Africa recovered well. पता है क्या, साउथ अफ्रीका ना बहुत मतलब हड़बड़ी में खेल रही है. They are misplacing the passes. That was a good stop interception by Vasquez again. Vasquez या फिर Montes कोई एक होगा. नहीं, that was Golardo. Ball back to Vasquez, to Montes. And he's on through. I think there is a penalty. नहीं, free kick है. That's a red card. That's a red card, and that is the first red card of the FIFA World Cup 2026. Important to say, shit hole को red card मिला है. I was telling you कि he is shit hole. Mexico on full press, huh? And shit hole deserves a red card. He was the last man, um, and he absolutely deserves that red card.
बट मुझे एक डाउट है, इज इट इनसाइड द बॉक्स और आउटसाइड द बॉक्स? रिप्ले अच्छे से नहीं देखा, बट आई थिंक वीआर वुड चेक इट. बिग लॉस फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग थोड़े लीकी थे ऑन द डिफेंस, और अभी दे हैव टू प्ले विथ वन लेस मैन फॉर 40 मोर मिनट्स. रोएन विलियम्स ने अब तक साउथ अफ्रीका को गेम में बचा के रखा है. कैन ही डू इट? कैन ही डू इट व्हेन जिमेनेज will be taking the penalty into his heads? Rowan Williams is playing some mind games just outside the box. मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट और दिस इज अ फ्री किक. क्या दिस इज अ फ्री किक? मुझे लगा कि पेनल्टी दे रहा है. सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी. जस्ट आउटसाइड द बॉक्स. And Jimenez का shot blocked by the wall. Mexico still have the ball, which is pressed super high by Golardo. I think सीधे मार दिया था. Good block, good block, good block. Mexico is having some strategy meeting. They had, I think they had, and Mexico again. Mexico again. Good, good, good tackle by South African defender. Corner है, obviously. क्या दिखा रहे हैं? साउथ अफ्रीका की डिफेंस अब थोड़ी ज्यादा फॉर्मेशन में दिख रही है. बॉल इज आउट फॉर थ्रो इन ऑफ साउथ अफ्रीका. फर्स्ट हाफ से ज्यादा कतर एयरलाइंस ऑलवेज ऑन द स्पॉन्सर. ऑयल मनी बेबी, ऑयल मनी. कतर एयरलाइंस हाँ बहुत टाइम से फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर रहे हैं. इस साल एरमको, लास्ट ईयर भी थे एरमको, एंड दिस ईयर एज वेल. द ट्रॉफी स्पॉन्सर इज बुडवाइजर. लास्ट ईयर भी थे. साउथ अफ्रीका इज ऑन एन अटैक. आई थिंक साउथ अफ्रीका नंबर्स कमिट नहीं कर रही है आगे. दे हैव द फ्रंट थ्री ऑन द मिडफील्ड ऑफ मेक्सिको. तो कैसे ही होगा, मतलब उन लोगों का थोड़ा आगे जाना चाहिए. नाउ दे आर अप फ्रंट.
We have the two wingers. Good shot into the hands of Raul Rangel. Tic tac pass. What? हाँ, मेक्सिको एटलीस्ट अभी तक तो जीत रहे हैं एंड Foster is being subbed off short passes but on attack. Short passes but on attack. हैं? मतलब कौन? साउथ अफ्रीका या सब इन? मैं देखने ही भूल गया कौन सब इन हुआ है. बट दे हैव सब आउट लाइल फॉस्टर. आई थिंक उसने ही एक शॉट मारा था, एक इकलौता शॉट जो साउथ अफ्रीका ने मारा. दैट वाज लाइल फॉस्टर. मे बी सम इंजरी इश्यूज बट पता नहीं. बट डजंट मेक सेंस फॉर मी क्योंकि आपका टॉप स्ट्राइकर, टीम का टॉप स्ट्राइकर है लाइल फॉस्टर एंड यू सब हिम आउट ऑन द 56 मिनट ऑफ द फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप. पता नहीं. और थोड़ा माड़ा माड़ी यहाँ पर दिखते हुए साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका शॉर्ट पासेस. हाँ हाँ हाँ, सही बात है कि दे आर नॉट काउंटिंग अपॉन द लॉन्ग शॉट्स दे हैड ऑन द फर्स्ट हाफ. बट फिर भी उन्हें ज्यादा करना पड़ेगा. यस, देयर इज अ फाउल. Ankit is playing direct like live on it. फाउल एक अच्छे पोजीशन में मिली है. फ्री किक. Near the box. Yes. Eric Lira wants to take a chip shot, I think, जैसे वो शो कर रहे हैं. But of course, he might be faking it. Johan Vasquez having a fight, having a tussle with the South African defender. And that's a good cross in, headed away by the South African defender. Not the best angle. कभी कभार वहां से गोल हमें हाँ कम देखने को मिलते हैं. बट Infantino sitting at the VIP couch of Estadio Azteca. I don't think there will be any more goals in this game. Roberto Alvarado on your screen. Raul Rangel के पास ball. Johan Vasquez on the ball back. Golardo. Montes. Passing the ball well. Mexican defense अपनी बैक फोर अच्छे से बना के रखी है. आई थिंक अच्छा डिफेंस है इन लोगों का. Lucas Vasquez now to Guiones. Good cross. थोड़ा शॉर्ट पर गए Roberto Alvarado. But that was again a good chance created. थोड़ा short. Goal kick for for Rowan Williams. अब ये लाइव नहीं चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है ये. इसमें नहीं चल रहा है.
They are not in a hurry for the second goal. uh, they are not in a hurry ऐसा नहीं है, but I think अभी कितने, I think 10 मिनट तो हो ही चुका है कि they have got a red card South Africa. ऐसा फील नहीं हुआ कि they are playing with a 10 men अभी तक तो, है ना? So maybe um, कोच कोच का नाम क्या था मैं भूल गया. ह्यूगो ब्रूस का शायद ये डिसीजन है कि डिफेंसिव बढ़ा दो. गोल अगर मारेंगे नहीं तो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि एज यू नो जीडी में फर्क आने से बहुत डिफरेंस आ जाएगा. वी हैव नंबर 11 थेम्बा जुआन coming in place of number 23 of South Africa, Adams. To be on a safe side, yes, to be on a safe side. Themba Zuen is a 36-year-old, very aged for the World Cup, but playing at this age, at the greatest level of the world, at the top sporting event of the world, something special as well. Now, Mexico has the ball. Look, Johan Vasquez to Montes. Johan Vasquez again passing the ball. Alvaro Montes. Montes with the ball again. Raul back to Raul Rangel. Jimenez asking for the ball, and Jimenez gets the ball as well. And that was a foul, a hard foul, by Quinones. I think yeah, it deserves a card. अगर आप kick in कर रहे हो, of course there is a ball, but shoulder height से ऊपर आप kick in कर रहे हो, I think this is a yellow card. I think it is a yellow card. Come on. South Africa left wing. Ramos, yeah. Number 11, number 15, I guess. He is a good winger. दौड़ना तो आ ही जाता है भाई साउथ अफ्रीकन को. I mean, not only South Africans, African. Selena Gomez is on the Estadio Azteca for the first match. टेम्पो बहुत गिर गया है भाई सेकंड हाफ में, टू बी ऑनेस्ट. Both teams are not trying to attack much. Modiba, yeah. Montes with the long ball, intercepted by the African defenders pretty well. Quinones trying to press hard, and Quinones has won the ball.
Pass to Jimine. Good block by the South African defenders. Substitutions for Mexico. Guterres and Fidalgo are substituted out, and Lucas Chavez and Mora. Gilberto Mora, striker, 17-year-old. Keep your eyes on him. He is the youngest player in the 2026 World Cup, Gilberto Mora. Uh, Last minute equalizer from South Africa. Are we getting 2010 back? I mean, 2010 maybe the first goal by South African player Shabalala, and equalizer by Mexico on 74th minute. हो सकता है, maybe history repeats itself. हो सकता है. Uh, there is still almost 20 plus minutes to play, and that was a hard touch. Guineas now have it. Gilberto Mora, good cross in, and that was a goal. That's a goal by Jimenez. That's an amazing header by Jimenez. I think यहीं पर सीलन हो ही रहा है गेम, है ना? I think we can seal the game in to the uh, hosts, Mexico. Amazing header, amazing cross. Cross by whom? Cross किसका क्रॉस था, मुझे देखना पड़ेगा एक बार. Amazing goal by Jimenez. Cool, composed, must header. बारिश गिर रही है Estadio Azteca में. And South Africa are 2-0 down. Celebrations खत्म ही नहीं हो रही है मेक्सिको की. Mexico is a very good team, यार. I mean, we have drinks break, right place, right time. Amazing striker. मेक्सिको नंबर्स में अटैक कर रही है. इन केस ऑफ अगर साउथ अफ्रीका में देखो तो वी हैव वन स्ट्राइकर, दो विंगर्स. They are not. That is not working up well with South Africa, I think. Huh. Raul Jimenez scoring the second, Quinones scoring the first for Mexico. Amazing matchup we are having here at the first game of the World Cup. Discussions करनी पड़ेगी South African team को, because game has not gone as they would have thought. In the first place, यहाँ पर जिमिनेस के प्रेस के वजह से ही बॉल जीती है मेक्सिको, एंड द क्रॉस वाज अमेजिंग. Mexican fans are celebrating. It's their World Cup. It's their time to host it. It's the fans' World Cup. Destroyed encounter, yes. Destroyed encounter. Leaky defense, I think
Next match is against South Korea and Czech Republic. Czech Republic अगर मैं अभी सोचूं तो they are a good team. I mean they are a good team to defeat this South Africa. Uh, let's see, let's see. Out of position, हाँ, out of position तो नहीं, उतना नहीं. Mexico wins the ball back, and that's a throw in for South Africa. 70 minutes in, 20 minutes more to play. Johan Vasquez with the ball again. Johan Vasquez trying to pause the game a bit. Passes to Gallardo. Montes. Passes to Quines. And the ball to Gilberto Mora. And it is an offside. थोड़ी थोड़ा offside था. Mexico again won the ball back. Uh, good interception, good win by South Africa. But Mexico has the ball back, and it should be a penalty. No, it shouldn't be a penalty. But there was a hand. Elbow तो मारा है भाई. Elbow तो मारा है. During the counter defense opens. अभी हुआ है ये. Alvarado का pass. Jimenez with the ball. This is if the defender is stopping you to go to the ball, that should be a penalty. ये penalty होना चाहिए. Card for the South African defender again. 3 defenders online, but बहुत गंदी डिफेंडिंग थी वहां पर. बट वो सब छोड़ो, दैट वाज अ पेनल्टी. एल्बो मार, वो आगे खड़ा हो गया उसके. साउथ अफ्रीका इज कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ कार्ड्स. अगर अगर बाय चांस दिन अच्छे नहीं गए और थर्ड पोजीशन में क्वालिफाई होने की बात हुई तो they have collected a lot of cards in the first game itself. I don't know. Savez has the ball. Johan Vasquez with the ball again. Alvarado. Guinness has the ball again.
And that was a good that was a good chance as well. Mexico has the ball again. Tackles अच्छे हैं. Mexico 2 goal difference, so they don't care for, I mean, जितने ही गोल डिफरेंस हो तो उतना बेटर ना. क्या पता आगे के 2 मैचेस हार जाए, बट दिस मेक्सिको टीम इज नॉट लूजिंग. आई डोंट थिंक दे आर लूजिंग एनी गेम इन दिस ग्रुप. टॉप टीम है भाई, टॉप टीम. मेक्सिको इज अ टॉप टीम दिस एट दिस वर्ल्ड कप. ब्लू लॉक क्या होता है? Alvarez and Gonzalez are on the pitch. Edson Alvarez is on the pitch. He is a 28-year-old midfielder from Fenerbahce. टॉप टीम इन यूरोप के लिए खेलता है बंदा. टॉप प्लेयर है. Doubts थे about his injury before this World Cup, but he is there. He is there. Edson Alvarez is on the pitch for Mexico in the 76th minute. Sports psychology, no. नाम नहीं सुना, sorry. Might be. Alvaro Montes to Johan Vasquez. Alvaro has ball. Again to Alvaro. Ball back to the goalkeeper. Montes. Eric Lira. Good ball to Reyes. Israel Reyes. Back to Montes. Good ball to Gilberto Mora. Gilberto Mora driving the ball forward to Alvaro, and that's a throw in for South Africa. Mexican number 10, Alexis Vega, 28-year-old, coming to the pitch. मेक्सिको फिर से अटैक करते हुए, और क्रॉस इन, डिफेंडेड वेल बाय South African defenders. South Africa pushing the ball forward. And Gilberto Mora has won the ball. That is a foul on South African defender by Gilberto Mora. We are close to the 80th minute and the South Africa के players शॉट पर जा रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत कम है. आई थिंक मैक्सिकन प्लेयर्स और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की अगर हम लोग कंपैरिजन करें, और इवन इन द वर्ल्ड रैंकिंग्स हमें अगर देखने को मिलता है, मेक्सिको इज रैंक्ड 15th and
साउथ अफ्रीका इज रैंक्ड 60th, तो उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है. बट आई थॉट कि साउथ अफ्रीका वुड शॉक एवरीवन इन दिस वर्ल्ड कप. इट्स ओके, कुछ कुछ प्रेडिक्शंस गलत होती है. अच्छा शॉट, अच्छा सेव, एल्वार्डो गिरा पड़ा है. Good shot from Apolis, 24-year-old striker from South Africa, of course. We are clocked into the 88th minute of the first game of World Cup. Mexico is winning this game by a margin of 2-0. I think Mexico are over with their substitutions. So VAR check होगा, VAR check for potential red card, और या फिर हाँ potential red card के लिए. I don't think this is a red card वाला offense. What does the ref thinks about it? That is more important. Which FIFA World Cup live in audience in future? मतलब for sure red. मुझे रेड तो नहीं लग रहा है, मतलब मडाउ को रेड मिल सकता है, पता नहीं. Which FIFA World Cup live in audience in future, मतलब कौन सा वर्ल्ड कप देख पाएंगे. आई थिंक 2030 वर्ल्ड कप जो है वो स्पेन, मोरक्को और और कहा था, मैं भूल गया. स्पेन, पोर्टुगल एंड मोरक्को में है नेक्स्ट वर्ल्ड कप. तो आई डोंट थिंक कि वो वर्ल्ड कप में, ऑफ कोर्स इसकी भी बात है, बट होपफुली अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 2034 का वर्ल्ड कप, एंड दैट्स द सेकंड रेड फॉर साउथ अफ्रीका. थोड़ा सा हार्श है फॉर थेम्बा स्वेन, 34 year old, 36 year old, as I said. थोड़ा हार्श डिसीजन, बट आई थिंक थोड़ा हार्ड था. मतलब फुटबॉल में पता नहीं. 2034 World Cup will be hosted by Saudi Arabia, and hopefully, hopefully 2034 तक बुढ़े हो जाएंगे. But it is a dream to watch a World Cup live in audience. Financial stability, और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस साल जितने कॉस्ट है, क्योंकि यूएसए ने उतना कोऑपरेट नहीं किया है वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए जितना कतर ने किया था लास्ट टाइम. कतर हैड बिल्ड कतर हैड बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम जीरो. बाड़ा या फिर
13 स्टेडियम्स उन्होंने बनाए फ्रॉम स्क्रैच टू होस्ट दिस टूर्नामेंट. सो उस लेवल की डेडिकेशन आई थिंक सऊदी अरेबिया में भी है, बिकॉज सऊदी अरेबिया आर ऑल्सो building some new state of the art stadium, football stadiums. uh, कुछ एक मतलब उन लोगों के किंग का नाम पे था स्टेडियम. सऊदी प्रोसेस, पासपोर्ट प्रोसेस नॉट इजी वन. देखेंगे देखेंगे, वी हैव टाइम फॉर दैट, वी हैव टाइम फॉर दैट. फिलहाल तो साउथ अफ्रीका ने 2 रेड कार्ड्स उठा लिए एंड मेक्सिको हैड स्कोर्ड 2 goals. एंड 85th मिनट पे है हम लोग अभी, almost ending the first game of the FIFA World Cup 2026 and first watch along of my YouTube career as well. So F1 के लिए हाँ, even for WrestleMania सऊदी अरबिया ने होस्ट किया था ना लास्ट वाला. Ball, Mexico has the ball again and good good block. खींचा तानी चल रहा है वहां पर बॉल के साथ भाई साहब. Israel Reyes was down on this ball. Alvarado checking in. डायरेक्ट रेड शो किया वहां पे फॉर द साउथ अफ्रीकन. मडेव शायद नाम था उसका. रेफ कैम का व्यू एपिक होता है. यस, it makes you feel like that you are on the stadium, you are on the pitch as well with the players. मजा ही है, वो अलग मजा है भाई. एमएलएस में आई थिंक सबसे पहले एमएलएस में इंट्रोड्यूस किया गया था रेफ कैम, उसके बाद इस साल से वर्ल्ड कप में यूज हो रहा है. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. मेक्सिको आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्कोरिंग अनदर, मुझे ऐसा लग रहा है. आई हैड प्रेडिक्टेड 3-0 एट द स्टार्टिंग ऑफ द गेम. खत्म ही होने वाला है आई गेस. साउथ अफ्रीका पीसेस फॉलिंग वन बाय वन, बट दे आर प्लेइंग विद 9 men, सो क्या ही करेंगे वो यहाँ से. सेकंड रेड मुझे तो नहीं लगता, मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि वो रेड था, बट ठीक है, ठीक है. अगर रेफ को लगता है देन इट्स ओके. सेनेगल इज द टॉप टीम. सेनेगल कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप, बट देखो ग्रुप ऑफ डेथ मिला है उन लोगों को.
They will be facing France, Norway, and केपो वार्दे था केपो वार्दे था या फिर मतलब सॉरी 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 इराक इराक फ्रांस नॉर्वे सेनेगल एंड इराक दैट इज अ ग्रुप ऑफ डेथ दे आर ए गुड टीम एज वेल ईरान ईरान था या इराक था मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है रुको 7 minutes +7 Iraq, yes, Iraq we have there. So for me, Senegal is a top team, of course, CONCACAF K champions, African champions, and South Africa have the ball with them. South Africa on a counter attack, 1v1 पे है, 1v1 पे है, and that should be a yellow card. That should be a yellow card for that. That is a red card. If he is the last man, तो हाँ, books allow करती है कि वो red card हो सकता है, but that was not a heavy touch on him. That was not a heavy touch, but क्योंकि वो लास्ट मैन था तो हाँ इसको मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं कि लास्ट मैन को आप अगर ऐसे छुई मुई भी कर दो तो दैट इज अ रेड कार्ड टू मोंटेस ही वाज द लास्ट मैन और नहीं छुई मुई भी नहीं ये तो सीधा मार ही दिया था भाई हाँ हाँ नहीं ये रेड कार्ड डिजर्व करता है दिस इज अ रेड कार्ड यूएसए ईरान रशिया इसराइल इन सेम ग्रुप भाई आपको क्या वर्ल्ड वॉर 3 करवाना है मतलब क्या फुटबॉल देखने आए हैं हम लोग फुटबॉल वर्ल्ड वार करा दो भाई करा दो मेक्सिको हैड बीन हिट विथ अ रेड कार्ड अगेन तो 3 रेड कार्ड दे दिया है पहले ही मैच में चलो ये टकलू भाई साहब आज घर से रेड कार्ड मतलब घर में कुछ तो हुआ है कि रेड कार्ड आज साथ आया है साउथ अफ्रीका के प्लेयर डिस्कस करने चले गए मोकोएना would be taking the free kick I guess मोकोएना और नंबर 14 that is मोबोकाजी मोबोकाजी मोकोएना और मोबोकाजी डिस्कसिंग द फ्री किक की कैसे लेना है और इस साल पता है वर्ल्ड कप में एक नया रूल है कि यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस मतलब फुटबॉल में ऐसे यूज करते हैं ना कि फ्री किक लेने से पहले कि लोग लिप रीड कर देंगे तो ऐसे करके कर लो क्या हो गया इसको तो इस वर्ल्ड कप में यू कैन नॉट डू दिस क्योंकि रेसिज्म बढ़ रहा है इससे बोल रहे हैं लोग तो ठीक है मतलब साउथ अफ्रीका विद द बॉल अगेन ah fall short on that throw
बिहार से जा रही है। साउथ अफ्रीकन ड्रिंक्स। अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा पास, गुड क्रॉस इन, बट डिफेंडेड वेल बाय योहान वास्केस। थ्रो इन फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी चांस बनाते हुए, बट आई थिंक दे आर फॉलिंग शॉर्ट विथ टाइम। दे आर श्योरली फॉलिंग शॉर्ट विथ टाइम। सिर्फ 1 मिनट बचते हुए, as the clock clicks in 6 minutes of the last match of the FIFA World Cup 2026. And Mexico on a counter. Cross in, defended well by the South Africans. साउथ अफ्रीका के पास चांस है, मेक्सिको खुल चुकी है, बट दे डोंट हैव एनी चांस नाउ। 7 minutes क्लॉक इन हो चुकी है, एंड that's the final whistle of the first match of FIFA World Cup 2026. Mexico has won it by a margin of 2 goals, 2-0. 2-0 it is. मेरी prediction थी 3-0, आपकी थी 3-2 and 3-1. But close enough, close enough. Good game, I guess. उतना भी खराब गेम नहीं था. Second half was quite sloppy in some places, but एज ए होल आई थिंक एक अच्छा गेम, अच्छा ओपनर देखने को मिला हमें एट दिस वर्ल्ड कप. I predicted 3-1. Difference margin is same. Yes, yes. Kudos to you. 2 गोल के डिफरेंस में आपने प्रिडिक्ट किया था, एंड इट इज द करेक्ट प्रिडिक्शन. कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, गिफ्ट विफ्ट नहीं है हमारे पास, बट kudos to you. And I think my was most accurate. कितना था आपका? You predicted? Where did you predict? है, देखा ही नहीं मैंने. छोड़ो, कोई बात नहीं. साउथ अफ्रीका का टकलू राइट विंग बहुत धोखा देता है. टकलू राइट विंग मोदुए या फिर मोदू के नाम है शायद, इसका पता नहीं. छोड़ो. डिसेंट गेम विथ मेनी रेड कार्ड. 3 रेड कार्ड्स. आई मीन 3 रेड कार्ड्स एट द फर्स्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप. थोड़ा शॉकिंग है. पता नहीं, मुझे सेकंड वाला जो साउथ अफ्रीका का रेड था वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा, बट ठीक है, ठीक है. इट इज द लैग कर रहा है मेरा यहाँ पर. इज इट वर्किंग प्रॉपर्ली? सेफ साइड 2-0 लीड, रिमेंबर. या 2-0 इज अ सेफ प्रेडिक्शन टू मेक, बट अगर फुटबॉल के जितने भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, थ्योरी बनाने वाले लोगों पे बिलीव करो तो 2-0 इज द हार्डेस्ट थिंग टू हैव व्हेन यू आर फेसिंग अनदर टीम. क्योंकि ऐसे बहुत बार बोला गया है कि जब आप 2-0 में होते हो, उसी टाइम पे आपके पास कमबैक होएगा, 3-2 में हार जाओगे. अगर आप लास्ट ईयर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में भी देखते हो तो अप टिल 78th मिनट अर्जेंटीना वाज 2-0 अप अगेंस्ट फ्रांस. सबको लगा था कि दैट वाज गोइंग टू बी इट, क्योंकि फ्रांस वाज ऑलमोस्ट आउट इन
द होल 70th मिनट, फिर 2 मिनट में दो बैंगर गोल्स फ्रॉम किलियन एम्बापे, एंड द मैच गोज टू द एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में फिर से एक एक गोल, एंड देन द मैच गोज टू द पेनल्टी एंड अर्जेंटीना फाइनली विंस इट। बट आई थिंक 2-0 का एक तो कर्ज होता ही है, जितना भी मैंने देखा है। बट good to have you all on the stream. Uh, Let me have a pick for the Instagram story of the day. So that was our, you can expect shock from top teams. Top teams say shock. आई थिंक फ्रांस में इस साल लोग बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन से रख रहे हैं। मुझे लगता है कि दे विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है। So first watch along done. I think it is high time to end this stream. कुछ बातें करने हैं आपको, अंकित, if you are still there on the stream, wanna have some chat, or I will be ending the stream. I think ओपनिंग सेरेमनी देखा किसी ने? ओपनिंग सेरेमनी, आई थिंक इस साल का ओपनिंग सेरेमनी इज, ओपनिंग सेरेमनी देखा? अरे छोड़ो छोड़ो, मैच छोड़ो, मैच छोड़ो, ओपनिंग सेरेमनी देखा किसी ने? बाय बाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में तो उठना है फिर से 7 बजे। आई डोंट थिंक कि मैं सुबह वाला मैच का स्ट्रीम करूंगा, बट मिठाई दियो मेरे को, नेक्स्ट टाइम वी मीट फॉर श्योर, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। वर्ल्ड कप में देखते हैं कभी अगर मिले तो। बट ओपनिंग सेरेमनी आई थिंक वाज वेरी बैड इस साल का, मतलब क्या ही ओपनिंग सेरेमनी था, क्या ही फालतू ओपनिंग सेरेमनी था। मुझे तो बहुत भद्दा लगा इस साल का ओपनिंग सेरेमनी, ऑनेस्टली। बट वी विल बी हैविंग 2 more ओपनिंग सेरेमनीज जो कनाडा और यूएस वाले मैचेस को ओपन करेंगी। सो हाई होप्स फ्रॉम देम। सो वी शुड एंड द स्ट्रीम आई गेस, है ना? So bye bye guys, that was it from the first match of the FIFA World Cup 2026.